Let's turn from there to our ground report today. The Kanwar Yatra is a journey. Kanwar Yatra is a journey of devotion and deep-rooted faith. However, lately, the Kanwar Yatra has become controversial and now is coming under the shadow of rising communal tensions in Uttar Pradesh, from nameplates on eateries, identity checks, to the selective targeting of roadside vendors based on their religion. What is this Kanwar Yatra then all about? Has this become about division, or is it not really about devotion? Take a look at this report from Ashutosh. The Kanwar Yatra, an annual pilgrimage to Haridwar by Lord Shiva's devotees, is mired in controversy. While the Yatra is set to start after more than a week, it has already hit headlines with allegations of identity checks, segregation and intolerance. A controversy erupted in Uttar Pradesh after a Muslim man named Tajammul was discovered working at a dhaba in Muzaffarnagar using the name Gopal. Tajammul claims the dhaba owner had advised him to take a Hindu name for protection from possible backlash. बैग तोड़ दी थी, देखो मेरी क्या नाम इतना बड़ा था। आपको नाम क्यों, आपको जब नाम बदलने की बात कही तो तुमने क्यों सोचा क्यों नहीं कि गलत नाम देखो, नाम उन्होंने रखा था मेरा नाम, होटल वालों ने। After protest, the dhaba was shut down. Now a campaign by Hindu group is underway to verify names, religions and identities of people working at shops and dhabas along the Kanwar Yatra route. होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र लगाना और भगवा झंडा लगाना, ये हमारा विषय है। यदि हम कहीं धोखे से चले गए, भाई वहाँ शिव ढाबा है, गणेश ढाबा है, राम श्री कृष्ण ढाबा है, यदि वहाँ चले गए फिर हमें पता लगा भाई ये तो सनातन धर्म के लोगों का ढाबा नहीं, संचालन तो इसके मुस्लिम करते हैं, तो फिर हम वहाँ से वापिस आ जाएंगे। अगर वहाँ खाना सात्विक मिल रहा हो तो? नहीं, वह वापिस आ जाएंगे और पुलिस को सूचना दे देंगे, भाई आप अपना इनको संभालो, पुलिस अपने आप देखेंगे। In Muzaffarnagar, people claiming to be Shiv Sena workers took to streets and began scanning UPI apps of dhaba owners to confirm which religion they belong to. क्या क्या चेक होता है? हमें आपके मिर्च मसाले और आदमी कौन कौन रह रहे हैं आपके यहाँ पे, सारी चीज चेक होती है। नाम हम पूछा उन्होंने? जी, लाइसेंस वगैरह सब चीज देखते हैं। तो आप लोगों ने लगा रखा है, नाम पहचान सब है जी? हाँ जी, सारा टोटल काम। तो कुछ आके पूछते थे क्या करते? ये बोलते थे कि कुछ लहसुन प्याज वगैरह नहीं है, सिर्फ सिंपल शादी हरी खाना है। आप लोगों के बारे में पूछताछ किसी तरह की? नहीं सर, हमारे बारे में तो कुछ नहीं है। वैसे मतलब कि बोलते थे तुम कैसे, मतलब कि कैसे खाना पीना खिलाते हो, मगर सर अच्छी तरह खिलाते हैं। As preparations pick up pace, dhaba owners on the Delhi-Haridwar route are repainting their shops, putting up rate cards, saffron flags, and even their own photos declaring their identities. While some Kanwariyas say they prefer eating only at Hindu-owned shops that serve only Sattvic food, others say faith is very personal. As long as the food is good and vegetarian, the religion of the cook should not matter. खाने में कांवड़ यात्रियों के लिए, भोले के लिए नाम और धर्म जरूरी है या खाना महत्वपूर्ण होता है? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? नाम भी जरूरी है, खाना तो ऐसे हम कहीं खा नहीं सकते, अपना ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। जा रहे हैं बाबा के दरबार पे तो ऐसी वैसी जगह खा भी नहीं सकते। On the ground, pressure is mounting. Muslim shopkeepers are preparing to shut down during the yatra. Year after year, they receive unofficial instructions to close or cover their signs. What follows is quiet compliance in the face of growing fear. What I'm being told by these workers that administrative officials, the police, food and safety departments often taking stock of the situation, taking visit, checking their the supplies, ensuring hygiene for the pilgrims, but more importantly, also questioning the identities, the people, the workers that are working here, their identities are being checked. Is the Kanwar Yatra being used to tear the social fabric of India? The Yatra, once a spiritual journey, is now becoming a reflection of the polarization in society. With Ashutosh, Bureau Report, India Today. In my humble opinion, devotion should have no place, repeat, no place for division.